हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मेरा नाम रिंकू है और ये वीडियो बिटमोजी वर्चुअल क्लासरूम से रिलेटेड है। मैंने मेरे स्टूडेंट्स के लिए बिटमोजी वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट किया था, एक बिटमोजी वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट की थी, द वे यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन। और ये उनको बहुत पसंद आई थी। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर my experience with you, and why not this particular benefit be taken by each and every teacher around. So that is the reason why मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, एंड इफ़ यू फील इट इज़ वर्थ, यू कैन इवन शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। दिस इज़ अ काइंड ऑफ बिटमोजी वर्चुअल क्लासरूम जो मैंने मेरे बच्चों के लिए क्रिएट किया था। ये वर्चुअल लाइब्रेरी बनाई थी मैंने उनके लिए और उन्हें बहुत पसंद आई थी। सो टू स्टार्ट विथ, आइडियली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस इज, आपको आपके फ़ोन के ऐप स्टोर में जाके बिटमोजी ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ पे यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, एंड बेस्ड ऑन दोज इंस्ट्रक्शन आपको आपका एक लुक अलाइक बिटमोजी क्रिएट होगा आपके लिए। Now this is the kind of Bitmoji which the Bitmoji app gave it to me. So this is my Bitmoji, or ये this is what we use basically when we create a Bitmoji virtual classroom, so that the students have that teacher-student feel when they are having a look or when they are using the Bitmoji classroom. And after we are done with that, what we have to do is we have to come to our computer, we have to open a new browser, और यहाँ पे Google extensions डालना है. When you click on Google extensions, you have an option here stating Chrome Web Store. आपको ये Chrome Web Store पे क्लिक करना है. When you click on this Chrome Web Store, यहाँ पे search bar में just about that extensions, you have to put Bitmoji. When you click on Bitmoji, now मेरे लैपटॉप पे already Bitmoji installed है. That is the reason why मुझे यहाँ पे rated option आ रहा है. आप जब first time create करते हैं तो आपको यहाँ पे जैसे add to Chrome है वैसे option आएगा add to Chrome. तो आप जब भी add to Chrome करेंगे तो आपके Chrome में there will be an extension like this on your Chrome, in your Chrome. That's Bitmoji extension. So once you get this extension, that means आपका Bitmoji install हो चुका है. And when you're creating Bitmoji virtual classroom, it is very important कि आप क्रोम यूज कीजिए. अगर आप क्रोम के अलावा दूसरे कोई ब्राउजर्स यूज करेंगे तो आपका Bitmoji virtual classroom will not be that effective as it turns out to be in Chrome, because Chrome supports Bitmoji virtual classroom. And यहाँ पे now as you see there are lot many Bitmojis available, so whichever you feel like you can use. So now let's get started. Now इसके लिए either you can go to your mail ID or okay, let me take you to your mail ID. यहाँ पे when we look here, we go to Google App Store, we click on slides. When we click on slides, we have to click on blank slide. When we go to blank slide, we get something like this in front of our screen. Now we have to give a title first here. I will give a title here as Bitmoji virtual classroom. This is the title what I gave for my this virtual classroom, Bitmoji virtual classroom. Now मुझे layout ऐसा नहीं चाहिए, मुझे blank layout चाहिए. So what I will do is I will go to this layout here. यहाँ पे I will take this cursor down
यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है ब्लैंक. आई विल क्लिक ऑन दिस ब्लैंक एंड नाउ my screen turned out to be blank. Now after we are done with this, now we start working on our slide. So our first step here in slide is to create a background. इसके लिए आपको डायरेक्टली कोई इमेज नहीं ऐड करना है. You have to click on the background here, which is just besides layout. Click on background. यहाँ पे you have to choose image. When you click on choose image, you have to go to Google image search. और जब आप Google image search में जाते हैं तो आपको टाइप करना है wall and floor. So आपको various options आएंगे wall and floor का. What you can do is आपको जो भी पसंद आता है वो आप पिक कर सकते हैं. Okay, मेरा इमेज ये सेट हो चुका है. वंस आई कैन सी के बैकग्राउंड में ये इमेज आ गया है. आई विल क्लिक ऑन डन. So once I am done with this, now the second step is when we think of classroom, we should have a board. Now for board, मेरे classroom में green board है generally. So what I will do is I will go to insert image, then I will click here on search the web. I will go to search the web और यहाँ पे ये search में यहाँ पे हमें सारे ट्रांसपेरेंट इमेजेस चाहिए जो हम हमारे स्लाइड में डालेंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रांसपेरेंट इमेज डालें. तो आई विल पुट ट्रांसपेरेंट ग्रीन बोर्ड. ओके, दिस बोर्ड सीम्स गुड टू मी, सो आई विल टेक दिस. यहाँ पे इंसर्ट. Okay, I have this board here. What I will do is I'll drag it little on this side. I will squeeze it a bit because मुझे उसका length ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा छोटा चाहिए. So yeah, done. Perfectly placed. Okay, मेरा ये बोर्ड आ गया यहाँ पे. आई एम डन विथ बोर्ड. सेकेंड थिंग इज मैं जनरली मेरे क्लासरूम में कुछ एक थॉट्स प्लेस करती हूँ सो दैट द चिल्ड्रन कैन हैव अ लुक एट एंड दे कैन थिंक. सो ऐसा ही एक थॉट मैंने यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में स्टोर करके रखा है. सो लेट मी पिक अप दैट थॉट. मैं इंसर्ट में जाके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर में I have a class display here. मैंने ये select किया. Now ये thought थोड़ा सा बड़ा लग रहा है. I will make it a little small. Okay, I suppose this should be fine. I want this on this side. तो मैं उसको यहाँ पे place करती हूँ. Just okay, it is fine. और अभी मुझे उसको एक background color देना है. तो ये border color में जाके I will let me select. Generally मैं tinted paper पे ऐसे thoughts place करती हूँ. So accordingly let me just, हाँ, मैंने ये color डाला है. मैं थोड़ा border thickness बढ़ाऊंगी so that वो दिखे properly. Yeah, here it is seen. Okay, we are done with the board. We are done with the thought what I generally have in my classroom. Now I would also like to have a flower pot here because I somehow like that in my virtual classroom. So let me search for a transparent flower pot. Okay, let's use this one. Okay, let's use this one.
Okay, it got loaded. Now इसको मैं रीसाइज करूंगी मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से. Okay, it looks perfect to me now. Okay, fine. So we are done with the flower pot. Now I need a sofa basically, because that is how generally I take a class, virtual classroom. So I will look out for a transparent sofa. When we look for a transparent sofa, lot many options are available. Okay, I'll select this one and I will insert this. Okay, we got the sofa here. Only thing is, पहले मैं उसको resize करूँगी. Secondly, I don't want it to be face towards right. I want it to be facing towards left. So I will click on this. I have an option of rotate here. I will rotate it horizontally, flip horizontally. And now I will place this sofa on this side, little away. Yes. Now again, I feel that we can have a different color sofa. So let me change the color. For changing the color, we have the option of format options. So हम format option पे जाएंगे. वहाँ पे recolor का option है. तो recolor में जाके let's see कौन सा color will suit well. Okay, let me try with this color. Yeah, this looks fine to me. So we continue with this color. Now, बेसिकली मैंने ये वर्चुअल क्लासरूम इसलिए क्रिएट किया है कि बच्चे पहले ये वर्चुअल क्लासरूम में आए. यहाँ पे मैं बुक प्लेस करने वाली हूँ. वो बुक में वो एक चैप्टर गो थ्रू करे बिफोर कमिंग टू क्लास. सो फॉर दैट आई वांट अ बुक रैक. तो अगेन मैं इंसर्ट में जाके इमेज में जाके सर्च द वेब करके I will look out for transparent wooden bookshelf. Okay, here I have options. Let me see which one is better. Okay, I am liking this one. तो ये मैंने पिक किया, सिलेक्ट किया और ये मैं इंसर्ट करती हूँ. इंसर्ट हो गया. अभी I will take this one here. Okay, I'll just resize a bit. Yes, here we. Okay, यहाँ पे now I want to place a book here. So what I will do is ये again ये मैंने मेरे कंप्यूटर में सेव करके रखा है. At present हमारा रीडर चल रहा है जेम्स एंड द जायंट पीच. तो उसका कवर पेज मैंने मेरे कंप्यूटर पे स्टोर करके रखा है. So I can do that thing. I will go to upload from computer and यहाँ पे I have the reader's front page, James and the Giant page. वो मैं इमेज यहाँ पे लेके आई हूँ. So I will come here. Let me see now if it is getting fitted. No, it's still big. हम उसे थोड़ा छोटा करेंगे और
थोड़ा सा और छोटा. Okay, we are almost there. Yes. Abhi, I want them to see the chapter 1 of James and the Giant Peach before they come to my class. So what I will do is, मैं यहाँ पे I will go to YouTube. I will search for a lot of Okay, I'll look out for the read aloud of James and Giant Peach. यहाँ पे मुझे पहला ही ऑप्शन मिल गया है, James and the Giant Peach read aloud. So what I will do is, I will just click this link. And here, ये सिलेक्टेड होना बहुत जरूरी है. ये सिलेक्टेड रख के यहाँ पे इंसर्ट लिंक पे क्लिक करना है. इंसर्ट लिंक पे क्लिक करके कंट्रोल V, हमने जो लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पे आ गया है. एंड वी विल अप्लाई दिस. सो वी आर डन. सो नाउ हमारे बच्चे जब यहाँ पे ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो दे विल गेट डायरेक्टेड टू द रीड अलाउड ऑफ द जेम्स एंड द जायंट पीच व्हिच दे हैव टू सी. So we are done with this much. यहाँ पे now यहाँ पे I want to insert a text box. So I will insert a text box. I'll write a message here for them. I wrote a message saying good morning children, because generally मैं मेरे बच्चों के साथ morning में होती हूँ. So I thought let me put a message as good morning students. And generally अभी ये मेरे बच्चे quite used to हो गए हैं ये format से. So they know कि यहाँ पे basically, or let me make it, okay, let me make it a middle alignment. And I want the color to be white, because white green पे एकदम दिख के आता है. And here again make link insert करूंगी. मैंने एक He lived peacefully with his mother and father. मैंने उनके लिए ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट करके रखा है, मॉर्निंग वीडियो फॉर देम. सो आई विल क्लिक ऑन दैट and this link I will copy and I will paste it here. This link has everything about the classroom. I have wished them morning, as well as I have given an instruction stating that you have to see the read aloud chapter 1 before coming to the class. So now they very well know that what they have to do before coming to the class. So this is one option by which you can give the instruction. Another option is you can write it here. Okay, I made it white and I don't want it underlined. Yeah, now perfect. Okay, done with the board. Now another thing with regards to this message is you can, there is a text box here. If you don't want कि आप वीडियो नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक मैसेज अपने बच्चों के लिए डाल सकते हैं. Good morning students. There is a reader kept on the shelf
click on that and see chapter 1 before we meet virtually. So this is the kind of instruction what you can give to your student. Now comes an interesting part. Let me have my Bitmoji placed here. So I go to the Bitmoji option. Okay, here comes the most fun part. ये सारे Bitmojis में से जो मुझे चाहिए वो मैं right click करके I will copy that image and I will come here and I will paste it. Now here comes my Bitmoji. Okay, and I will place myself on this sofa. My kids really like it when they see this Bitmoji like this in their virtual classroom. So here we are almost done. Okay, let me do one thing. Let me have a small wooden table. I like this one. I just resize it. I'm placing this in front and I will place a laptop here. Because generally it's the laptop on which I work. So that gives my kind of feel to them. That is the reason I'm placing this laptop on this table. Here we go. And we are almost done with our Bitmoji classroom. I hope you would have enjoyed watching at how do we create a Bitmoji classroom. So यहाँ पे we are done with creating the classroom. Now let's see हम ये हमारे classroom में actual classroom में कैसे use कर सकते हैं. So one option is कि आप आपके drive में से you go to your classroom, open this classroom option. यहाँ पे in this stream, one way to do this is you can add from Google Drive. This gets stored in the Google Drive. So see, we have our Bitmoji virtual classroom ready here. One option is you add from here. You give the instruction. Dear students, please through the Bitmoji virtual classroom before we meet face to face.
This is a kind of instruction you can give and you can post. This is one way of doing it. Secondly, if not like this, then you can open your Bitmoji classroom, copy the link, copy the whole link, and say you can click here, you can paste the link, and you can give the instructions whatever you want to give and post it. So these are the two ways by which you can share your Bitmoji virtual classroom with your students. Hope you like the tutorial. Please like and share, and thank you for watching. Thanks a lot.